इस वीडियो में हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स के बारे में। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स। सो whenever we talk about tangents to an ellipse, we study three forms. There are three types of forms that we study. पहले फॉर्म को हम बोलते हैं पॉइंट फॉर्म. Now what do we study in point form is कि सपोज हमारे एलिप्स पे हमें एक पॉइंट गिवन है एंड दिस इज अ पॉइंट गिवन टू अस. लेट अस से इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स है x1, y1. तो इस पॉइंट पे हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे लिखेंगे? सो लेट अस से कि हमारा इक्वेशन ऑफ एलिप्स इज गिवन एज x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल्स टू 1. नाउ इन ऑर्डर टू फाइंड the slope of tangent in this at this point, we will take the help of differentiation and we will find dy by dx. So on differentiating, हमको क्या मिल जाता है? 1 by a square into 2x plus 1 by b square into 2y into dy by dx, and this is equals to 0. So clearly 2 we can cancel out और हमारे पास क्या रह जाएगा? हमारे पास रह जाएगा y upon b square into dy by dx is equals to minus x by a square. So further अगर हम dy by dx ढूंढ लेते हैं, so we get minus b square by a square into x by y. And since हमें tangent इस पॉइंट पे ड्रॉ करना है where the coordinates is x1, y1, we can write the slope will be minus b square by a square into x1 upon y1. And therefore the equation of tangent is y minus y1 is equals to minus b square by a square into x1 by y1 into x minus x1. तो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, so let us take this part to the next page. तो हमें मिलेगा y1 minus y1 square upon b square is equals to minus xx1 minus x1 square upon a square. तो अभी हमें टर्म्स को थोड़ा रीअरेंज करना पड़ेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ओपन अप दिस ब्रैकेट. तो हमें मिलेगा y1 by b square minus y1 square by b square is equals to minus xx1 by a square plus x1 square by a square. So we take this term to the right and this term to the left. So we have x1 by a square plus y1 by b square is equals to x1 square by a square plus y1 square by b square. Now try and understand. Since ये जो पॉइंट है ना हमारा, ये इस एलिप्स पे लाई करता है, तो ये पॉइंट इस एलिप्स के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा एंड देयरफॉर वी विल हैव x1 square by a square plus y1 square by b square is equals to 1. So here ये जो राइट हैंड साइड वाला एक्सप्रेशन मिला, this value comes out to be 1 and hence the final equation turns out to be xx1 by a square plus y1 by b square is equals to 1. Now there is a terminology that we use in case of conics जो कि हमने सर्कल्स में भी पढ़ रखा है, जो कि हमने पैराबोला में भी पढ़ रखा है, उसको यहाँ पे भी हम देख लेते हैं क्या होता है. So we bring this term 1 on the left hand side. तो हमारा इक्वेशन बन जाता है x1 by a square plus y1 by b square minus 1 equals to 0. और ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है ना, इसको बेसिकली हम t से रिप्रेजेंट करते हैं. सो t इज इक्वल टू xx1 by a square plus y1 by b square minus 1.
और आज के बाद हमें कभी भी इक्वेशन ऑफ tangent लिखना होगा, we will simply write the equation as t equals to 0. So that is what we have for the point form of tangent in case of ellipse. And this formula t equals to 0 is also applicable in case of circles, parabola and hyperbola. Now, जैसा कि हमने पहले भी रिवाइज किया है, let me again revise once again. To obtain the equation of tangent from any conic, to obtain the equation of tangent, we do the following. We replace x square by xx1, y square by yy1, x by x plus x1 by 2, y by y plus y1 by 2 and xy by x y1 plus y x1 by 2. तो जब भी हम इस तरह का रिप्लेसमेंट करते हैं, what happens is we get the equation of tangent for all the type of conics, be it a circle, be it a parabola, be it a hyperbola और be it ellipse. तो यहां पे अभी तक हमने समझा कि हम पॉइंट फॉर्म ऑफ tangent कैसे ढूंढते हैं. तो आई होप दिस इज क्लियर एंड दिस पार्ट स्पेसिफिकली माय डियर स्टूडेंट्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये हमको हमेशा याद रखना है. नाउ इन द नेक्स्ट पार्ट वी स्टडी द नेक्स्ट फॉर्म जिसको कि हम लोग कहते हैं स्लोप फॉर्म ऑफ tangent. स्लोप फॉर्म ऑफ tangent. तो इस वीडियो के पहले हमने ऑलरेडी एक कॉन्सेप्ट सीखा है जिसको हम लोग कहते हैं इंटरसेक्शन ऑफ अ लाइन एंड अ टेंजेंट. उसमें हमने ये सीखा फॉर y is equals to mx plus c to be a tangent to the ellipse x square by a square plus y square by b square equals to 1. The value of c has to be plus or minus under root of a square m square plus b square. So that is the equation of tangent in the slope form. That is, we can say y is equals to mx plus and minus under root of a square m square plus b square is the slope form of tangent. Now we will look at the variation here. कभी कभी हमको क्या होता है ना कि हमारा जो एलिप्स है ना वो स्टैंडर्ड एलिप्स नहीं रहता है. सो इफ द एलिप्स इज ऑफ द फॉर्म x minus h का स्क्वायर by a square plus y minus k का स्क्वायर upon b square equals to 1 and we want slope form of tangent. So what can we do? We do the following. So it is given by, so ये जो y है ना, now look here, if you compare this equation and this equation, instead of y, what do we have now? It is y minus k. And instead of x, what do we have? We have x minus h. So similarly, in this equation, we will replace y by y minus k and we will replace x by x minus h. So the slope form of tangent in this case becomes y minus k is equal to m into x minus h plus and minus under root of a square m square plus b square. So this is the slope form of tangent in case of shifted ellipse. Now we have looked at two types of tangents. One is point form और दूसरा वाला जो है इसको हम लोग कहते हैं slope form. Now the third form of tangent is called parametric form. Now this is very simple.
So we know the coordinates of a point on an ellipse in the parametric form is given as a cos theta, comma b sin theta. So let us say अगर हमने एक एलिप्स लिया हुआ है और हमें इस एलिप्स पे एक टैंजेंट ड्रॉ करना है एट अ पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट्स है a cos थीटा, कॉमा b sin थीटा. नाउ इन द पॉइंट फॉर्म हमने क्या लिया था, इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स को हमने लिया था x1, y1. So if we replace x1 by a cos theta and y1 by b sin theta in the point form, हमको parametric form of tangent मिल जाएगा. So let me say, if you remember, the point form was given by x1 by a square plus y1 by b square equals to 1. So we get x into a cos theta by a square plus y into b sin theta by b square, and this is equals to 1. So एक a cancel हो जाता है, एक b cancel हो जाता है, and therefore the final equation we have is x cos theta over a plus y sin theta over b. So this is the equation of tangent in parametric form. तो इस वीडियो में हमने देखा कि तीनों फॉर्म्स ऑफ टैंजेंट हम कैसे डिराइव करते हैं. नाउ यू हैव टू रिमेंबर ऑल दीज थ्री फॉर्म बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. ये हो गया पैरामीट्रिक फॉर्म, ये हो गया हमारा स्लोप फॉर्म, और ये उसका वेरिएशन, एंड द नेक्स्ट वन इज equation of tangent in point form, which is here. So that is all that we have in this video, students.